अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑल ऑफ यू एक और एपिसोड के साथ दैट इज़ रिलेटेड टू द ई कॉमर्स पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट इजाज़ अहमद कादरी। इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है दैट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू आवर फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 2020, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। इससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल में मेंशन किए गए हैं, अब हमने उन इंस्ट्रक्शंस को समझना है। इससे पहले जो प्रोग्राम थे हमारे, उसके अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ई कॉमर्स पॉलिसी के मतलब जानने की कोशिश की। अब वो रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, उनको हमने डिस्कस करना है। तो इसीलिए इसका टाइटल रखा है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। रिमेंबर द पाकिस्तान कैन इंक्रीज इट्स GDP by 36 billion US dollar and create the 4 million jobs by 2025 via an increase in the use of digital financial service alone. That is the resources of the central bank explained in their communique. जो ये चीज़ भी जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है ई कॉमर्स ट्रेड का। अब इससे रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हमारे पास आई हैं और जो पैराग्राफ नंबर है चैप्टर नंबर 12 में, जो एक्सपोर्ट का चैप्टर है, उसको हमने देखना है। तो इससे रिलेटेड FE सर्कुलर नंबर 7 जो कि दिसंबर 2, 2020 को इशू किया गया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसको मेंशन किया गया है पैरा नंबर 39 चैप्टर नंबर 12 फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल 2020, जिसका टाइटल है बिजनेस टू कंज्यूमर B2C ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। अब इसकी इंस्ट्रक्शंस को हम जानने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट as per the government notification number 16 ECS 48 dated the July 1st 1948, a declaration is required to be furnished by the exporter at the time of export to the controller of customs that an amount representing the full export value of the goods has been or will be disposed of in a manner and within a period specified by the State Bank of Pakistan। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके तहत हमने ई फॉर्म मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना शुरू किया था। ठीक है, उससे हम बेस लेके चल रहे हैं। इन केस ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट, द डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय द एक्सपोर्टर्स शैल बी फिल्ड बाय द कोरियर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सपोर्टर in the e-commerce export module of the VBOG. For export other than through the e-commerce module of VBOG, Form E shall continue to be issued by the authorized dealer at the request of the exporter as per the existing prescribed instructions. Second, regulations, due diligence of the e-commerce exporters in VBOG by the authorized dealer। अब ये सारी इंस्ट्रक्शंस पैराग्राफ की हम कोड कर रहे हैं। Authorized dealer upon receipt of the request along with an undertaking from the exporter as per Annexure A shall register the exporter in the B2B e-commerce module in VBOG after performing the due diligence of the customer as per the applicable instructions on managing money laundering, financing of terrorism risk. Authorized dealer handling e-commerce export related transactions are responsible to carry out the customer risk profiling and its periodical monitoring to ensure that the money laundering and FT risk is timely and appropriately identified and managed in accordance with the risk management policy of the authorized dealer. The authorized dealer may add the separate section for e-commerce in their risk management policy
to manage the money laundering and terror financing risk. Shipment in VBOC through the courier registered by Pakistani customs. The exporter shall submit their export consignment along with the required detail to any courier of their choice, registered with Pakistani custom in VBOC. The courier handling the export shipment shall file the goods declaration to the Pakistani customs on behalf of the exporter. Each individual consignment shall be identified on the basis of the unique house airway bill number as per the format prescribed by the Pakistani custom. The value of each consignment should be based on the actual price of the product as per the invoice issued to consumer and must not exceed the $5,000. याद रखना इसको. To detail of the export shipment shall be accessible to the authorized dealer in e-commerce profile of the exporter in VBOC after the shipment of the goods from Pakistan. इसके बाद हम देखते हैं जी रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड. कोरियर के थ्रू आपने एप्लीकेशन सबमिट की, उसके बाद आपने अपने फिनेंशियल्स की डिटेल दी. आजकल जो सिस्टम हम एप्लीकेबल कर रहे हैं दैट इज़ द PSW. यहाँ VBOC के साथ लिंक करते हुए इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइन आपको प्रोवाइड की गई है. तो अब जब एक्सपोर्ट आप कर लेंगे तो उसके बाद जाहिर है कि जो प्रोसीड की रियलाइजेशन है दैट इज़ द की पार्ट. तो उसको आप अंडरस्टैंड करते हैं. मेथड एंड पीरियड फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स. Full export value of the goods exported from Pakistan and declared to the custom authorities by courier companies on behalf of the e-commerce exporter, adjusted for any permissible discount as per subpara 6 below, should be received on the due date for payment or within the 60 days from the date of shipment, whichever is earlier. The export proceeds should be received from abroad by an authorized dealer through banking channel or international payment scheme gateways, either in foreign currency in which the authorized dealer maintain accounts or in Pakistani rupee from the non-resident rupee account, repatriable or NRP rupee value account. इसके बाद देखना है जी मंथली रिकैंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट. एक्सपोर्टर शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ मंथली स्टेटमेंट टू द ऑथराइज्ड डीलर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म गिविंग द डिटेल ऑफ प्रोसीड रियलाइज्ड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट शिपमेंट एज पर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन एट Annexure B along with the relevant invoices. The authorized dealer will use the data provided in the format to make the realization outstanding export shipment in VBOC as per procedure given in subpara 7 below. The statement shall be submitted by the exporter within the 5 working days from the end of the month to which the statement pertains. Authorized dealer would promptly follow up with the exporter if the statement is not submitted as per prescribed timeline. Paragraph 6, subpara 6, remittance of the foreign expenses and retention in the exporter's special foreign currency account. Very important subpara. Authorized dealer are permitted to allow payments of the commission, charges, discount, bank charges due to the foreign importers, agents, financial institutions by e-commerce exporter in Pakistan up to the 10% of the invoice value of the goods. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिटेंशन अकाउंट है स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट का, उसके अंदर ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट से जो प्रोसीड आपको मिलती हैं उनका 10% इनवॉइस वैल्यू ऑफ द गुड्स का आप रिटेन कर सकते हैं. In case where the exporters is not required to pay any of the above expenses or pay any amount less than above mentioned maximum permissible limit, such amount of the commission, discount, etc. or differentials not exceeding the 10% limit can be retained in the exporter foreign currency retention account
with an authorized dealer in Pakistan. The funds held in such foreign currency accounts can be used by the exporter for payment abroad on account of marketing, promotion and other services related to e-commerce export. अब उसकी यूटिलिटी आपको बताई गई है कि जो पैसा 10% इनवॉइस वैल्यू का आप स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर रिटेन करते हैं, उनकी यूटिलिटी क्या हो, तो वो आपको बताया गया है कि ये दो हेड ऑफ अकाउंट फॉर पेमेंट अब्रॉड ऑन अकाउंट ऑफ मार्केटिंग, प्रमोशन and other services related to e-commerce export. The account can also be used for settlement of overdue, shortfall, export proceed, replacement, etc. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई ओवरड्यू बिल रिपोर्ट हो चुका है पहले, उसको सेटल करने के लिए आप इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं. एंड अदर परमिसिबल पर्पसेस अंडर द रेलिवेंट रेगुलेशन. अब उसके बाद सब पैरा 7 के अंदर आपको बताया गया है रियलाइजेशन अगेंस्ट द ई कॉमर्स एक्सपोर्ट शिपमेंट. Authorized dealer will record proceed realization against each house airway bill in e-commerce bankers credit advice BCA module in VBOC through the following options. Number 1, the settlement against the 100% realization. Number 2, settlement with the discount or the commission etc. up to the 10%. Number 3, settlement with proceeds from exporter's foreign currency retention account including the partial or the short realization. Number 4, settlement against advance payment. Number 5, settlement against replacement, repaired or the faulty goods. Right? अब सब पैरा 8 के अंदर ओवरड्यू केसेस को किस तरह हैंडल करना है वो बताया गया है. That is also the very important part of this instructions. Authorized dealer shall monitor the non-realization or delay in realization of export proceed by e-commerce exporters beyond the prescribed period of 60 days from the date of shipment of the goods through the VBOC. In case the outstanding export bill aggregating to the $20,000 or above are not realized within 60 days from the date of shipment as per the VBOC data. As at the end of respective month, authorized dealer shall make the exporter status as suspended in the e-commerce module of VBOC. 60 दिन के अंदर अगर आपकी अमाउंट जो है जिसका टोटल एग्रीगेट $20,000 या इससे ऊपर होगा, अगर आउटस्टैंडिंग है तो उस एक्सपोर्टर को सस्पेंड कर दिया जाएगा ई कॉमर्स मॉड्यूल में. द सस्पेंडेड स्टेटस शैल बी मार्क्ड बाय 15th of the following month after taking into account the monthly statement of proceed realization filed by the exporter as per para 5 above. This would debar the exporter from further exports through the e-commerce मॉड्यूल. जाहिर है कि फिर उसको फर्दर एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं होगी अंडर दिस मॉड्यूल. बी, द स्टेटस ऑफ द एक्सपोर्टर मे बी रिस्टोर्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर टू द एक्टिव. जिसको सस्पेंड किया गया था अब उसको एक्टिव कैसे करना है वीबॉक के अंदर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट बिल unrealized for 60 days or more from the date of shipment, provide the aggregate amount of such outstanding bill become the less than $20,000. $20,000 से कम अगर हो जाता है आउटस्टैंडिंग बिल तो उसको रिस्टोर किया जा सकता है वीबॉक मॉड्यूल में उस एक्सपोर्टर को जिसको के पहले सस्पेंड किया गया था. डी, in case of non-realization or delay in realization of export proceed beyond the 90 days from the date of shipment as per VBOC data, as of month and date, the same shall be reported as overdue to the SBP Banking Services Corporation. Annexure C के अंदर रिपोर्ट करना as per guideline prescribed in para 33 of chapter number 12 of Foreign Exchange Manual. However, the shipment overdue on the month end and subsequently marked realized in the VBOC on the basis of monthly proceed realization statement submitted by the exporter
should be excluded from such reporting. तो इस तरह से एक और एपिसोड को हमने कंप्लीट किया है रिलेटेड टू द ई कॉमर्स बिजनेस। अब इस एपिसोड के अंदर हमने खालिसतन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इंस्ट्रक्शन जो चैप्टर नंबर 12 के अंदर दी गई थी उनको हमने देखा है। सो नाइस ऑफ यू। इंशाल्लाह एक अगले व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।